हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ समस्त को। तो स्वागत करछि आपण मान समस्त को ओडिया एग्जाम गुरु चैनल को। तो एई वीडियो रे आपण मान को मो 30 टी जबरदस्त एमसीक्यू क्वेश्चन नि आछि। चलंतु बेसी देरी न कर वीडियो को आरंभ करियो। चलंतु अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन अछि the Odisha government recently approved the building and management of aviation assets and network B-MAAN scheme. What is the total projected investment for this scheme over 5 years? तो कौन होगा आंसर? 1500 कोटी ना 4182 कोटी ना 2900 कोटी ना 5500 कोटी? कौन होगा? B-MAAN यार फुल फॉर्म कौन अछि? बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट एंड नेटवर्क B-MAAN स्कीम। अच्छा, तेरा आंसर कौन होगा ना 4182 कोटी। The B-MAAN scheme aims to significantly boost the aviation sector in Odisha by developing the new airports, maintaining existing assets. The total projected investment is 4182 कोटी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन होची? The application process for the flagship Subhadra Yojana was recently reopened in Odisha. What is the eligibility age criteria for women under this scheme? कहते 18 रु 55 ना 21 रु 60 ना 25 रु 65 ना 18 वर्ष रु एबव कोनटा हबो? एटा आंसर 21 रु 60 वर्ष। वुमेन एज 21 रु 60 वर्ष ईयर ऑफ कते सुधा 2025 मार्च 31 सुधा are eligible to apply for the Subhadra Yojana which promises a financial assistance voucher. ठीक अछि? अच्छा, मुझे ड्रॉ रे कलर चेंज करनो अछि। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which two key destinations in Odisha were recently included by the Ministry of Tourism under the Swadesh Darshan 2.0 scheme? कौन एटा? खिंडा एंड देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। अच्छा, ये जो स्कीम फिल्म विषय रे हमें डिटेल्स इन डेप्थ ओडिसा रे कोन कोन स्कीम अछि, इंडिया लेवल कोन कोन स्कीम अछि से विषय रे हमें वीडियो गोटे स्पेसिफिक पर्टिकुलर वीडियो बना देबा। ए जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपण माने जस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन एंड छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन जोटा आपण माने पाइबे। देखंतु कोन अछि ना खिंडा नॉन फॉरेस्ट हिस्टोरिकल एसोसिएशन एंड life sanctuary were selected for integrated tourism development under the central government's revitalized Swadesh Darshan 2.0 scheme. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन थिला? सॉरी, 4 नंबर क्वेश्चन। द शहीद माधव सिंह हाथ खर्च स्कीम launched by Odisha Chief Minister. The scheme is specifically targeted to which group? एटा होची ट्राइबल स्टूडेंट। माधव सिंह, शहीद माधव सिंह तो किसी आउट नॉलेज किसी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगेले बहुत सारा क्वेश्चन हमें करि परिबा। अच्छा, आंसर कोन अछि? स्कीम एम टू प्रोवाइड 5000 एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अप्रोक्सीमेट 2 लाख ट्राइबल स्टूडेंट। ए दिटा मध्ये सब क्वेश्चन आसीबार चांसेस अछि, राइट? अच्छा, कलिंग बालीयात्रा फेस्टिवल सिंबलाइजिंग एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेड इज हेल्ड एनुअली ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर? को रिवर? एटा तो जीएसए भी कहि परिबो, महानदी रिवर। देखंतु महानदी फेयर तो एशिया लार्जेस्ट ओपन फेयर। एटा कोन? एटा भी ଗୋଟେ क्वेश्चन है। एशिया रो लार्जेस्ट जो ओपन फेयर कोंडी? ओपन एयर फेयर कोंडी? फेयर माने मेला जाबी तो कोंडी? कलिंग बालीयात्रा। 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन जिबा। Which new department was recently created by Odisha government to oversee the state's flagship women empowerment program? कौन डिपार्टमेंट नुआ करी ओडिसा रे आछि? कौन डिपार्टमेंट? एटा होची मिशन शक्ति। The government issued an order for creation of new separate department named Department of Mission Shakti to give greater focus and autonomy to the state's women help group program. ठीक अछि? नेक्स्ट क्वेश्चन। The Odisha Civil Services Preliminary Examination 2024 OPSC OCS जोटा कोन prelims was conducted by OPSC in October 2025. The examination is for which group of service? कोन ग्रुप? आपण मानको जानिथिबे चाकरी रे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी बहुत प्रकार चाकरी थाए। जो ओसीएस ओडिशा सिविल सर्विस एटा को ग्रुप पाई? एटा होची ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। जो माने ओएस चाकरी पाई फॉर्म पकाने जो माने एस एग्जाम दियंती जो तहसीलदार वीडियो से लेवल ग्रुप ए एंड आउट टिके जो मिनिस्ट्री लेवल जोड़ा जे ग्रुप बी। ठीक अछि? नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was recently appointed as the in-charge Director General of Police, that is called DGP of Odisha recently? काम कराई छी? Mr. Arun Sarangi. Mr. Arun Sarangi, senior IPS officer, was appointed as the in-charge DGP of the state. एबे ठीक अछि? नेक्स्ट क्वेश्चन। जल साथी प्रोग्राम
अच्छा प्रोग्राम विषय गोटे स्पेसिफिक वीडियो आसी जीवो ठीक अछि जल साथी प्रोग्राम ऑफन हाइलाइटेड इन ओडिशा वाटर मैनेजमेंट न्यूज प्राइमरीली इन्वॉल्व्स कौन थे जल साथी ए जो जल साथी कौन थे किए कहबो अच्छा एटा आंसर होची सी community women volunteers ensuring safe water supply Jal Sati is a community-based program where trained women volunteers manage and ensure the supply of safe drinking water and collect user charges, promoting public participation. ठीक अछि next question the two national conference on mining center on the Viksit Bharat 2047 अच्छा 2 days national conference on mining उपरे 2 days रो कॉन्फ्रेंस जो हेतला ओडिसा रो कोन विकसित भारत 2047 यापर जो कॉन्फ्रेंस हेतला ओडिसा रो कोठी ओडिसा रो कोन जगह हेतला कोणार्क कोठी हेतला कोणार्क द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कोणार्क जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड ओडिशा गवर्नमेंट अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच हिस्टोरिकल साइट इन बालेश्वर इज नोन एज रक्त तीर्थ इरम ऑलरेडी क्वेश्चन भितरे आंसर अछि कोन इरम ड्यू टू मैस्केर ऑफर कंपेयर्ड टू जालियनवाला इंसिडेंट कोठी इरम रे आपण माने केबे जिबे जदि जालियनवाला हत्याकांड को आपण मानन को जदि सिवियरली हार्ट अटैक मतलब हार्ट ब्रेक करछि इरम को मध्ये गले आपण को सेम देश प्रेम शांति जिंस लागबे देखंतु द मैस्केर ऑफ इरम ऑन सेप्टेम्बर 28 1942 ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट resulted in the death of many freedom fighter earning the site of name रक्त तीर्थ ताको कोन कहले रक्त तीर्थ अच्छा next question Odisha was the first state in the country to introduce a specific type of budget document to address environmental concern. अच्छा ओडिशा फर्स्ट स्टेट कंट्री रे गोटे स्पेसिफिक टाइप ऑफ बजेट आनथिला कोन बजेट छडा के कहबो ग्रीन बजेट एनवायरनमेंट इंपैक्ट बजेट क्लाइमेट कोड बजेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बजेट अच्छा बजेट ऊपर गोटे क्वेश्चन पर्टिकुलर वीडियो आसी जीवो बजेट ऊपर कोन बजेट थिला कोन नै से आसिले ए जिंस सेट कवर हे जीवो एबे पई ए क्वेश्चन आंसर कोन क्लाइमेट कोड बजेट ऑप्शन सी Odisha became the first state to introduce the climate code budget document aiming to track and allocate research for climate change mitigation and adaptation across the various departments. Acha. Next question. Which city in Odisha, set to host the 18th Pravasi Bharatiya Divas? कौन city? 18 प्रवासी भारतीय दिवस कौन सिटी ऑर्गेनाइज करथिला भुवनेश्वर 18 प्रवासी भारतीय पेपर सब आडा सिनथिला कि key event for the connecting with the Indian diaspora is scheduled to be held in Bhubaneswar. कौन देबो भुवनेश्वर रे अच्छा the foundation stone for which major infrastructure project in Bhubaneswar was recently laid कौन थी with an estimated cost of 6225 कोटी टका देकी कोन इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भुवनेश्वर हेछि कोनटा भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट जो ये दे जाइछि कोन थी सेटा कोन जगहटा कलिंगनगर दे जाइछि सेपटे हबो भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट इज सिग्निफिकेंट अंडर द एम एट इंप्रूविंग अर्बन कनेक्टिविटी इन द कैपिटल रीजन ठीक अछि अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन द लोअर सुक्टेल डैम प्रोजेक्ट recently dedicated to the state primarily benefited the farmers in which region of Odisha को रीजन ऑफ ओडिशा रे जो लोअर सुक्टेल डैम कौन स्टेट पर एटा होची वेस्टर्न ओडिशा सुक्टेल डैम कोठी वेस्टर्न ओडिशा प्रोजेक्ट इज मेजर इरिगेशन इनिशिएटिव लोकेटेड इन द बलांगीर डिस्ट्रिक्ट कोठी बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे जिंस अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन was recently appointed as the 53rd chief justice of India 53rd chief justice of India recently किया संधि जस्टिस सूर्यकांत एडा एसएससी सीजीएल पई सीएचएसएल पई ओडिसा आरआई अमीन सब टाइप रो एग्जाम पई आपण ए क्वेश्चन टा पाई जिवे तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे करंट अफेयर क्वेश्चन भी पारिबो एडा एमसीक्यू रो स्टैटिक जीके जे भी आस पारिबो बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पई बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा ठीक अछि अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सूर्यकांत अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन which indigenous aircraft did president Draupadi Murmu fly कौन एयरक्राफ्ट रे द्रौपदी मुर्मू फ्लाई करथि becoming the first Indian air president to do so first one कोनटी एटा होची राफेल President Murmu flew in a Rafale fighter jet from Air Force Station in Assam कोनटी उठले आसाम रे
marking a historic first for the Indian president. ठीक अछि. The adaptation gap report 2025. Adaptation gap report 2025. Running on empty was recently released by which international organization? ये जो adaptation gap report 2025 running on empty ये जो कौन ये जो organization टा काहे द्वारा कौन organization द्वारा ये जो adaptation ये जो scheme टा ये जो initiative टा कौन organization द्वारा करा जाता है? एटा होची United Nations Environment Program. United Nations Environment Program. The UNEP report highlights the growing gap between the need of climate adaptation and the actual implementation of financial adaptation of mass-scale global. Acha. Which is the name of the new digital apps launched by the government for conducting the fully digital fifth marine fishery census? Fifth marine census कोटा? एटा होची व्यास भारत and व्यास सूत्र. Ministry of Fishery and launch कोटा Ministry of Fishery द्वारा आसी. Analysis data for marine fishery census ପାଇଁ. Marine fishery census ପାଇଁ fifth रे. अच्छा. The logo for the proposed National Maritime Heritage Complex was unveiled recently. The logo for the proposed National Maritime Heritage Complex was unveiled recently. This complex is planned to be built at which historical site? कौन historical site रे? इंडिया रो कौन historical site रे? एटा होची लथाल. लथाल आउ कोन ପାଇଁ फेमस? मोहनजोदारो हरप्पा सभ्यता किए कहबो आपण मानकु मु कहूची आपण ए जिंस कमेंट रे कोंतु. ठीक अछि. लथाल गुजरात लथाल आउ कोन एंशिएंट रीजन ପାଇଁ लथाल ला फेमस? अच्छा, Lothal is an important site in ancient Indus Valley civilization. देखो will host the NMSC. Next question. The Women Health Campaign SNSPA set 3 Guinness World Record in early November 2025. What does the acronym SNSPA stands for? ये जो SNSPA stands for what? एटा होची स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एंड अभियान. SNSPA स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान. एटा होची एब्रिविएशन तो आपण मानको मन रखिबे. ठीक अछि. नोट कर नेबे एंड मु लास्ट रे पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल रे पकई दे. ठीक अछि. The Indian Space Research Organization ISRO successfully launched the CMS-03 communication satellite using which rocket? Which rocket रे पठाइछि? एटा पठाइछि के कहबो? एटा होची LVM-3M5. The LVM-3M5 launch vehicle Mark 3 is ISRO's heavy lift launch vehicle. एटा heavy lift करे used to launch the CMS-03, a communication satellite. Right? Which country recently became the first in the world to impose a generational ban on tobacco and vaping? कौन country world एटा होची world के current affair. कौन country world रे जे कि generational ban करछि tobacco और vaping ऊपर? कौन country? Maldives. कौन country? Maldives. Recently Maldives आ इंडिया को ने गोटे आस्तिला गोटे बहुत बड़ कंट्रोवर्सी हितला. तो इंडियन माने मालदीव्स रो जो गवर्नमेंट को बहुत भलो ये करथिले. ठीक. Maldives became the first country to pass a law imposing ban on the sales of tobacco product and vaping to anyone born after a certain year, effectively creating a generational ban. But a particular age परे जो मसिया परे जो माने जन्म होइछन तांको पई ए जिंस ban. अच्छा. Who was posthumously awarded the Bharat Ratna in 2024? के भारत रत्न को 2024 काको मिलथिला? कर्पूरी ठाकुर. काको मिलथिला? कौन पाई फेमस? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार. A renowned socialist. ठीक अछि. Next question. October 31 is celebrated annually in India as which day? October 31 कौन डे जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमें नॉर्मली जानू एकता दिवस. तो एक राष्ट्रीय एकता दिवस ही हेतु. ठीक अछि. देखो राष्ट्रीय एकता दिवस भारत एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. In which city in Uttar Pradesh was recently designated a UNESCO creative site under the gastronomy category? कौन city? Recently UNESCO रो creative city. कौन city? एटा होची लखनऊ. Right. Next question. The 7th edition of Indo-Pacific Region Dialogue IPRD. Indo-Pacific Regional Dialogue 2025 focusing on maritime security was recently held in which city? कौन city रे? एटा होची न्यू दिल्ली. कोंटी? न्यू दिल्ली. The IPRD is an annual high-level international conference on the Indian Navy held in New Delhi. Next question. What is the name of the new digital initiative launched by DGFT for
easier trade facilitation recently पूरा फेमस होइतला ए जिंस न्यूज को सब बारतला कोनटा को को नेम रे व्हिच नेम ऑफ द न्यू डिजिटल इनिशिएटिव को नेम रे राउची सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड ECO 2.0 the director general of foreign trade DGFT launched the enhanced ECO 0 ठीक है 0 ECO 0 2.0 system to simplify and expedite the issuance of certificate of origin. Next question, the Dhanauri wetland, konta Dhanauri wetland, which was recently mentioned in environmental news regarding its preservation efforts, is located in which state? Dhanauri wetland कौन state रे अछि? कौन state रे? Uttar Pradesh. Dhanauri wetland, known for its significant bird population and biodiversity, is located in Greater Noida, Uttar Pradesh. कोठी? Greater Noida, Uttar Pradesh. Dhanauri मन रखियो. अच्छा. Which former captain recently announced his retirement from T20 World Cup International? World Cup sorry, T20 International. कौन captain former captain जो कि जॉय रूट? କାହାର captain? England ର କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ର ଆରନ୍ ଫିଞ୍ଚ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ର ଇଆନ୍ ମର୍ଗାନ୍. କିଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ରିଟାୟରମେଣ୍ଟ? କିଏ ରେ? ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍. ବହୁତ କୁଲ ପ୍ଲେୟାର ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ଥିଲା 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 30ଟା MCQ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 30ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି କିଛି ମଝିରେ ଫମ୍ବଲିଂ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ ବଟ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିବେ ଏଣ୍ଡ ଏ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ମିଳିଯିବ ତ ଆପଣ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ କରିନେବେ ଏଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓର ଯୋଉ PDF को आपण से जगह पाइले डाउनलोड करने थे ठीक अछि नेक्स्ट वीडियो कहा ऊपर आनिबे आपण माने सजेशन करंतु कमेंट रे ता सही पर वीडियो आसीबो एंड धीरे धीरे प्रत्येक जिंस ए चैनल माध्यम आपण पाइबे तो चैनल को आपण मानन को अनुरोध सब्सक्राइब करंतु एंड बेल आइकन को मध्ये क्लिक करंतु ठीक अछि रहउची थैंक यू जय जगन्नाथ।